A Journey Within. And we are also joined by Harilal Bhanushali ji, who is the executive director of the Brahmakumari studio. Uh, we have about 1,500 animation companies in India, but we are still very much enthralled by live action films starring our favorite heroes and heroines. We are not really making use of animation like it is in Japan or the US, where you have Studio Ghibli, you have the Pixar studio. And the reason why animation is required is because it allows filmmakers to explore complex themes and ideas that may be difficult to convey with live action. So now I would request Mr. Shujit Sharkar to say a few words about the animation industry, the use of animation, why it is required in filmmaking today. And then you're free to ask questions. If Mr. Bhanushali or Prasadji would like to add, you may please do. Shujit ji. Yeah, hello, good evening, and everybody. Thank you for joining us. Uh, Thank you, Monidipadi. Thank you so much. Um, and thank you for inviting me in this press conference on animation. Yes. Uh, this film, The Light, this was my first exposure to an animation world, actually. I never thought of that I will be part of any animation project. But then when I started working on this project, I realized uh, that's how potent and how important is for us to really not monetary investment, but invest in terms of art and talent um, towards animation. Just every year, look at the examples that the West is or Japan or European countries are setting in terms of animation. We have very few like animation animators or animation directors like Gitanjali would make a film and it'll never get released. I mean, so but it's got a huge uh, um, audience, and in terms of waiting to consume it. Um, so as you said about Pixar or Disney, I mean, we have never looked. I think it's a responsibility of Bollywood also, all the film industry. I mean, not exactly Bollywood, I think Bollywood or Tollywood or all the, film industry as such, to take this responsibility of promoting animation films and telling stories. Uh, like for example, we are using so much of video effects, visual effects in films. Like my last film, Zarudham, we had to recreate 1930 and 1919. So we had to take the support of animation, and and we are using it in live action films nowadays. There are some huge budget live action films, but unfortunately, I don't think Bollywood, whether it's a producers or directors or film actors, that they are participating to actually lift this format, which is so much more expressive, I feel. Um, so I think this particular format needs a huge support. Uh, like for example, in the bazaar, in the IFFI bazaar, there are three or four films which are, I think, are pitching, and they're very very well done, films. So and also for example, like we don't make too many children's films too, we really and animation is such a beautiful format to influence the art for children, where whether it's a folklore. I mean, and West has been talking about folklores, and we have so many folklores, but it's just limited to very limited short TV programs or YouTubes or nothing, not a full length features which is coming on with that much of a canvas. So I don't blame everybody else. I mean, I blame myself too in that I never participated in this. But now, after this film, little exposure to this film as a consultant in this film Light, I can see the vastness of animation films, and I really promise that now onwards I'm going to look into
to animation films and animation stories uh, very, very seriously. Um, yeah, this is all I'll have to, you know, contribute. And I'll request Prasad. He's the only one who made one film, many films for television and feature lengths, but one of his celebrated films is Shahabzadeh, I think, right? Which I think have really gone far in terms of visibility. So let him speak about animation films. Thanks. Yeah. I think so we are working on animation for almost 15 years now. Quite some time we tried to remain in a cartoon film space. So unfortunately, animation in India had stuck into that cartoon films domain. If you really look at the way visual narration for kids happening, serious work after Amar Chitra Katha, there is not much happened. You know, when we talk about Japan or when we talk about West, there is a huge visual storytelling, comic books, graphic novels. There is a huge market, and which gradually extended or graduated towards becoming an animation product. India, we lost it somewhere, but somewhere we decided to take it out of cartoon films domain, and we did a film with in which we also got a very good support and involvement of very big Bollywood director and producer Harry Baweja, and we did a film called Char Sahibzade, which tells the story about Guru Gobind Singh's four sons and their sacrifices. And that's the biggest animation film, but it's the biggest Punjabi film also. It grossed commercially, crossed 100 odd crores. It still runs in Punjab. And what something more which we learned and then we try to apply in this film also. What has happened is, if you really how deep content can go, that if you go to Punjab or if you go to Amritsar and if you look for posters of Char Sahibzades, today the posters are used using the characters from the film. Yeah. Now, what is important here is that when we use a Bollywood actor to play such a serious character, historic character or religious character, the life of that character remains till this Bollywood actor goes into the next film. Where animation is really helping it is that whatever we create visually, that remains permanent. So you have some actor playing Tanaji today and then some actor again going and playing an inspector somewhere else. The Tanaji is forgotten and that inspector role comes in the prominence. Now that is where we realized in animation, and then we are now focusing on history. We have a lot of projects coming in animation domain. In between, we did a film again in Punjabi called Motherhood, which was on Guru Gobind Singh's wife, and that was the first film which got released in British Parliament. It premiered in British Parliament. So animation from India is also picking up, but yeah, we have to just move it out of the cartoon domain, and we are lucky to have chance to learn from people like Sujit sir, because it is helping us to understand the grammar and create a new grammar for how to incorporate animation into mainstream. So yeah, it's an experiment, and fortunately we have been lucky all throughout. So let's see how it goes. Yeah. Thanks. So also, I think, like for example, actually we should have made Jungle Book. It's our story, and we should have made Jungle Book. I am surprised that we didn't make Jungle Book, and somebody from the West has made Jungle Book. So it's quite sometimes it's disturbing also. But I think now we are in a situation where the industry can really flourish in animation. We have really big talents, and you must know that most of the international studios are using sources here in India. You will not know somewhere in Indore, in Bangalore, in Hyderabad, there are studios and there are animators who are sitting and they're doing back-end job for the Disney or the Pixar. So I think for not only for feature films, full length for special effects, but also for animation, they're doing the background matte paintings, and so I think we need that talent here, and we have that. It just the industry need to just get up and shake themselves up and move and just make sure that we will make and produce and release, and theater should give as much
scope and time to the animation films. If you have anything to ask, you can. Yeah, we'll take questions. Please introduce yourselves and the organization you work for. Yeah. मैं सुजीत जी से जानना चाहूँगी कि आप इस फिल्म में कैसे जुड़े, क्योंकि एक मतलब धार्मिक या समझ लीजिए कोई स्पिरिचुअल संस्था, उससे जुड़ना मुश्किल होता है। मैंने ऐसा कहीं सुना कि शायद आपकी वाइफ फॉलोवर थी, तो शायद इस वजह से आप इस फिल्म में आए और आपने बनाया। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं इस फिल्म में जुड़ा, मैं बेसिकली एज ए कंसल्टेंट इस फिल्म में जुड़ा हूँ। मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर इस फिल्म में हूँ। सो मिस्टर हरीलाल भाई फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज और मेरे और भी कुछ दोस्त हैं। जब मैं उनके वहाँ पे गया, उनसे मिला, एंड ऑर्गेनाइजेशन में जब एक चीज़ देखा कि पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा जहाँ पे सब महिलाएं सब चला रही हैं वहाँ पे। सो सारे जो मेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सब महिलाएं उनको चला रही हैं। सेकेंडली, आई थिंक मेंटल हेल्थ पे जो उनका जोर है, वो मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एंड हरिलाल भाई ने कहा कि वो लाइव एक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, एनिमेशन। तो मैंने बोला मैं एनिमेशन तो जानता ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा आपको जुड़ना है। तो आई जस्ट बिकेम a consultant to help them because it was actually created by the Godly Studios, जिसके अंदर यहाँ पे शिखा बहन है, वो बैठी हैं, प्लस सुशील एंड अपर्णा है, एंड हमारे एनिमेशन टीम से हैं यहाँ पे भूषण एंड राजेश, एंड आई रियलिटीज़ में से प्रसाद, दे वर देयर। सो देन आई बिकेम एन कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट। सो मैं उस तरह से जुड़ा। मुझे भी लगा कि मैं कभी एनिमेशन किया नहीं है, एज ने मैं कहा। सो पहली बार मुझे लगा कि मैं ज़रा देखता हूँ कि कैसे मैं जुड़ सकता हूँ। सो जहाँ जहाँ क्रिएटिवली मैं कंसल्ट कर सका, मैंने उनको कंसल्ट किया इसमें। बच्चों पे बहुत फिल्में बनती हैं, एनिमेशंस, कार्टून्स फिल्में बहुत सारी बनती हैं, पर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि लोग इसे हॉल तक या कहीं भी जहाँ भी रिलीज हो देखने जाएंगे? कुछ नयापन है, कुछ आपने कुछ डाला है ऐसा कि लोग इस फिल्म के लिए मतलब भाग के दौड़ के देख के आए या भीड़ हो इस फिल्म के लिए? ऐसा क्या डाला है? क्योंकि बच्चों पे तो बनती हैं तो लोग चले ही जाते हैं, बच्चे आफत मचा देते हैं कि चलिए हम देखेंगे। ठीक है। तो आपने ऐसा क्या डाला है एनिमेशन में कि लोग इस फिल्म की ओर खिंचाव करें? देखिए, इसमें मैंने कुछ फिल्म में ऐसा कुछ नहीं डाला है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक डॉक्यू फीचर है। मेरे हिसाब से मैं जब भी कहता हूँ, ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक जो फाउंडर हैं, जिनको प्यार से ब्रह्मा बाबा बुलाया जाता है, ये उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर ये डॉक्यूमेंटेशन है। सो ऐसा क्या डाला है, ये तो नहीं। उनकी लाइफ अगर लोगों को खिंच जाती है, सो लोग ज़रूर जाएंगे देखने के लिए, मुझे लगता है। उसकी कोई गारंटी तो मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं बहुत लोग हैं जो धीरे धीरे देखेंगे। कुछ फिल्में होती हैं जो धीरे धीरे समझना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या है ब्रह्मा कुमारीज में, ये क्या है, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो फाउंडर हैं इनके, इनका क्या रोल है। सो मैं कहूँगा ये एक डॉक्यूमेंटेशन है एक किसी की ज़िंदगी पे ऊपर। मैं फीचर फिल्म नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये है एक डॉक्यू फीचर। सो उसके लिए धीरे धीरे आई थिंक उसकी एक चाहत बढ़ती है। जब लोग देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो आई थिंक लोग चाहेंगे कि अच्छा देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के जो लोग हैं, आई थिंक वो एक दूसरे को बोलेंगे देखने के लिए, वो देखेंगे। सो ऐसे ही फिल्में आई थिंक धीरे धीरे फैलती हैं, लोग देखते हैं। As it has been said rightly, uh, in National Board of Films Canada, they used to conduct a lot of programs in animation, very serious kind, on philosophy and other things. In fact, Films Division has used to send a lot of animators to National Board of Films Canada, and lot of films were being made with the serious themes and all that. So there is a mindset has to be changed, because a lot of people, they have not grown
beyond. They always think that animation films means it is only for kids and all. Even the number of people coming to the theaters, when we say that animation films, that will be the second or third choice. So we need to change the Yes, see, also, mindset. yes. And the people like Shujit Sarkar, it was a really surprising that you are into advocating animation. It's a fine, this one. Yeah, even And yeah. Even I am also surprised myself that I also came into this. So, uh, but the जैसे आपने कहा कि it's not just for children, ma'am. It is, I think, when the film Coco came out, I was in tears watching the film. I don't know, have you seen Coco or not? So or so the kind of finish, the kind of the artistry which has gone into animation film in the West, I think we can also do it. It just we need an effort to take one step. And I think whether it's a Bollywood or a Tollywood or whoever the film industry, whether it's a Tamil film industry or a Telugu or a Mumbai film industry, I think they must take an effort and move. And also I request all the actors to, because if you see in the West, a lot of A-grade actors who are popular and populist actors, they take participation in animation films. And very happily, if you see in most of the films, there are all A-list actors. If they come, it reaches more homes. So I think that participation is also very, very important. They should not just think that it's okay, one more small two-dimensional cartoon film that we are making. So you're right, and yeah, that's very, very important. I will try and be part of it. I'm also learning, so it's a new ground for me. So I just wanted to ask you that, like you said, this was your first brush with animation, so to say, and you just advocated that animation is something that everybody should use in the film industry. You've made Udham Singh, which is a fantastic film, but since it's a period film, it must have taken that much time, energy, effort to recreate that time. And yet these are stories, and India abounds in those kind of stories which need to be told. Do you see animation as a possible, I don't want to say, as something that you would use in lieu of, but can animation become probably one of the main kind of storytelling tools for stories like this, which are set maybe, in history, but are stories that are very important to tell? See, first thing you must understand that when you're creating a period film, everything is created, right? And animation becomes a very important part. If you see in Sardar Udham, even the walls or the buildings or the clothes or some of the people in the background who are falling, some of them are animated characters. Maybe not on the foreground, are in the background. A lot of cars in the London street, a lot of the buildings are all animated. They're all 3D animated, assets which we have used. Whether it's a smoke or whether it's a building or it's a cloth or whether it's a character who's standing there at a distance. We have made double-decker buses, trams, so everything is animated. So you create each and everything. And in an animation process, that's what I've learned, that every asset are created. So it's common for both the platforms. It's just that you have to create characters here in animation and a beautiful script, which is common for both again. Script is the key to the storytelling. So if you have a really good script to talk, you can take any format and talk about it. I don't think that should be, like, we have so many folklores. I think so they can be, I mean, if people talking about big scale those films which are now becoming popular, I think same big scale can be created in animation, and people can go, I mean, to watch. I mean, even if you watch all the period films from Hollywood which has come, or action thrillers, half of it is created on animation, if you see. So there's a lot of Even contribution. Titanic, sir, back then, I think a lot of it was created. Yes, I mean, whether it's Titanic or if you see Avatar now and everything, how they are created. So yes, you can Sir. please. Yeah. Yeah.
See, as far as our studio is concerned, iReality is we are predominantly in history, and that is our focus now. So we have a film coming on Hari Singh Nalwa. We have a large project coming on Salahuddin Ayubi, if you know the Islamic warrior. It is a Middle Eastern India co-production, massive animation film. If you go to a place called Chamkaur in Punjab, there is a theme park which has 10 theaters telling animated stories of 100 years of Sikh history. We are, in another 10-15 days, we are releasing a new museum on Bhagwan Valmiki in Amritsar. Again, it has hours of animated content telling stories of Laukush, Ma Sita. See, problem is you guys are not looking at animation. We are trying as a studio, and we get a tiny budget. We get a budget equivalent to a regional Marathi film, to a film which you expect to compare to Hollywood. Hollywood took 100 years to reach 100 crores. Nobody asked them that question. But I am 10 years doing animation film. Every time I take a project out, people ask me, why are you not like Hollywood? Ask them. I've never heard this question, anybody asking a Bollywood producer. I never heard that people asked Yash Raj why your films are not like MI. You don't. You ask us. Right? If you really see what is happening in the industry, hundreds and thousands of studios are working exceedingly hard. It is extremely hard because first, this kind of questions, extremely tiny budgets, and in that we do 70-80 crore revenue. Are you aware that that film did 112 crore revenue, animation film? Tell me in this room how many press guys know that that film did 100 crores. And when there was a wintry night, when farmer protest and farmers were losing there is a Sardar here, so he will tell. I was called at night asking a permission to show Char Sahibzade to farmers to get the motivation back. How many of you know about it? You will know Kartik Aryan gone somewhere. No, Sujit sir has seen how hard it is. Yeah, it is. How hard it is, because even somebody blinks his eyes. Take an example, an animator does 1 second animation a day. And still we are running the studios. So and it is his modesty, he says he is consultant, but he has really, really worked hard to get us where we are. And I'm really happy that Hari Bhavija ji or Sujit ji are looking at us and not keeping us into that 15 lakh an episode television serial space. So you guys also have to look at us. And I think Sujit sir, in that sense, has really, just him and people like him and faces like him, coming out and talking about the importance of animation. I think this will start at some way the conversation in the larger. Yes. Yeah, you ask. So my name is Suresh and I'm from online media. My question to you is that we are yet to catch up with the first two countries. And is there any roadmap within the near future of 2 to 3 years could we catch up with them? And what things should the government and the industry support to get there? So I think the where it gets block. I mean, is Prasad just spoke is the budget. Because it's a time-consuming art format. So like in every frame that you make. So I think to somebody, a producer, to come in and put that much of an budget, because it needs that kind of time and talent to put together. I think that's the it will be needed. Yes, why not? If there is a huge scale of an animation film and that animation film gets a subsidy, so that will be or a tax rebate to start with. Why not? I mean, and something with taking a folklore and making it huge. So talent की कोई कमी नहीं होगी, ये मैं बोल सकता हूँ. But I think it will be the effort and the budget that we need to put on in it. That's good, because as I said, all the back end work of Hollywood happens here.
All back end work happens here. Yeah. Sir, this is Archana Singh, journalist from Delhi. So first of all, I would like to say when we consider about the animation film, so we always confine to the कार्टून फिल्म. मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो स्टोरी के ऊपर बात क्यों नहीं करते हम. और मैं हीरालाल भाई जी से भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमें प्लीज़ बताएं कि क्या अलग स्टोरी है ये, क्योंकि एनिमेशन का लोगों को मिथ है कि एनिमेशन है तो वो कार्टून मूवी है. देयर आर मैनी मूवीज विच गिव अ मैसेज ऑल्सो. तो क्या आप भी मुझे प्लीज़ बताएं कि ये मूवी कैसे अलग है, द लाइट मूवी. My question is for all of you. थैंक यू मैडम. और ऑल मैं सभी मीडिया कर्मियों को स्वागत करता हूँ ब्रह्मा कुमारी की तरफ से. हमने ये क्यों चुना है, जो इस विश्वविद्यालय के स्थापक थे दादा लेखराज, जिनको हम ब्रह्मा पिताश्री ब्रह्मा कहते हैं, उनके बारे में हमने उनके जीवन में बहुत संघर्ष के बाद वो इस संस्था यहाँ तक पहुँची है. आज सारी दुनिया महिला सशक्तिकरण की बात करती है, किंतु दादा ने आज से 85 इयर्स पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम उठाया था और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था. और उसमें कितने संघर्ष हुआ है वो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा. नंबर 2, हमने एनिमेशन क्यों चूज़ किया. हम लोगों ने 1-2 एपिसोड बनाए थे. हमारे जो पिताश्री थे उनके हाइट वेट और अपीयरेंस ऐसा था, मैं बहुत स्पष्ट बोलूँगा आज, हमने दारा सिंह जी को लिया था और एक एपिसोड बनाया भी था. किंतु हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी थी, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा संस्था कभी भी किसी को डुप्लीकेट नहीं ले सकती है पिताश्री की जगह पे, और इसीलिए हम लोग एनिमेशन में आए. जो मैडम ने सवाल किया कि एनिमेशन के लिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हम एनिमेशन हम लोगों ने इसीलिए चूज़ किया कि एनिमेशन एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बनता है और हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जबकि हम किसी एक्टर को साथ में लेते हैं तो वो नहीं हो सकता ऐसे. और इसीलिए संस्था ने एनिमेशन मूवी चूज़ किया. और इस सारे मूवी में पिताश्री के जीवन की कहानी है, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे इस संस्था को स्थापन किया, इसका और उसका समाज से क्या संबंध है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा. मैडम ने पूछा कि जनरली एनिमेशन बच्चों के लिए होता है, ऐसा नहीं है. इस फिल्म के द्वारा, जैसे सुजीत सर ने बोला और प्रसाद सर ने भी कहा, कि एनिमेशन एक नया फ्रंट ओपन हो रहा है, हम उसका लाभ लेवे. इस संस्था ने भी उसका लाभ लेना नक्की किया और इसीलिए हम इस एनिमेशन मूवी में आए हैं. और ये एनिमेशन मूवी, मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ, इतना बड़ा एक जादू करेगा कि समाज का हर एक वर्ग इसको आकर देखेगा और संदेश पाएगा और पिताश्री के बारे में जीवन कहानी को भी समझेगा जो समाज से जुड़ी हुई है. हम इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, हम संस्था का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं. एक बहन ने पूछा सर को कि आप कैसे जुड़े इनसे. ये कोई प्रोपेगेंडा की बात नहीं है. एनिमेशन के द्वारा समाज के उत्थान की बात करनी है. हमें ये समझाना है कि महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है. हमें उनको समझाना है कि मेडिटेशन क्या कर रहा है, मेडिटेशन में क्या ताकत है, वो हम इस फिल्म के द्वारा बताने चाहते हैं. बाकी एक बात जरूर कहूँगा, टेक्निकल तो इनके जितना मैं नहीं समझता हूँ, किंतु सुजीत सर ने और प्रसाद सर ने हमें बहुत कुछ ग्रामर समझाया. मैडम ने जैसे कहा, मैं गॉडलीवुड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, 10 साल से आज पूरा प्रोडक्शन हाउस हम चला रहे हैं, किंतु मुझे ये एनिमेशन फिल्म ने बहुत कुछ ग्रामर सिखा दिया कि एनिमेशन में क्या ताकत है और क्या होना चाहिए. और सचमुच एनिमेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, जो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा और इससे बहुत सेवाएं होंगी. इसीलिए संस्था ने इसे पसंद किया है और इस फिल्म में आपको ये कहानी के साथ मैसेज मिलेगा. Thank you. ठीक है, कुछ ऐसा और भी देखने को मिलेगा कि संस्था के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लें. जैसे आपकी एक फिल्म तो बन गई है एनिमेशन की, क्या दोबारा भी कभी कुछ और इस संस्था के बारे में बनाना चाहेंगे आप? मैडम, फीचर फिल्म, एनिमेशन फिल्म में हम पहली बार आए हैं. नहीं, बाकी तो हमारे कम से कम 4,500 डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है. हमारे पास 19,000 एपिसोड बने हुए हैं, 3,500 गीत बने हुए हैं. हम 4 चैनल चला रहे हैं, सैटेलाइट, यूट्यूब, OTT चैनल चला रहे हैं, और जिसमें हमारे पास 27 लाख सब्सक्राइबर है एक के ऊपर. माना बहुत वास्ट है. हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, किंतु सर का आधार लेकर, जो क्रिएटिविटी सर ने कहा, हमें उनकी क्रिएटिविटी को इसमें डाला.
प्रसाद सर के एनिमेशन की ताकत को हमने डाला है, बाकी संस्था तो काम कर रही है और आगे करती रहेंगी। मैं आपको कहूँगा कि हमारे इन चीज़ों से आप भी जुड़े, यूट्यूब से जुड़े, ओटीटी से जुड़े, सैटेलाइट चैनल से भी जुड़े, हम सब जगह पे हैं और करते रहेंगे। हरिलाल जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट जब भी मैं देखता हूँ आज की तारीख में कंटेंट, सेक्स, वायलेंस और टेररिज्म, और वही सोसाइटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको, सुजीत दादा को, प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज यू गाइस रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स, नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स। क्योंकि सोसाइटी में एक आपकी जो पुरानी फिल्म है मुझे बहुत पसंद आई है, विकेड ऑनर, समथिंग आई कैरीड होम एंड स्टेड विथ मी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन ए ब्यूटीफुल वे, इन इट इनरिच्ड माई लाइफ। सो सबसे पहले आपका जो कंटेंट है ये आज की तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है, एंड पीपल अवॉइड इट, बट क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि सुजीत दा और प्रसाद जी ने ऐड किया है, तो एक खूबसूरत बात समाज को कही जाएगी और एक खूबसूरत तरीके से जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो आई एम रियली हैप्पी जनरली। एंड ये एक लाइन जैसे आपने कहा, ये शुड ओपन अप ए न्यू एवेन्यू टू स्टार्ट मेकिंग समथिंग विच कैन को क्रिएट मैजिक। और दादा ने कहा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, विच इज अलार्मिंग। We need something which can sort of balance, which can create something beautiful in the society. So thank you so much. इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे हरिलाल जी and सुजीत दा, since press people are there, we all are there. इस फिल्म के जरिए लाइट जो नाम आता है, मैंने देखी नहीं है, लाइट इज समथिंग वी ऑल नीड, it removes darkness. So could you like to elaborate how, like, is it a fiction, complete fiction, non-fiction? जैसे आपने कहा उनकी लाइफ स्टोरी तो 100% वैसी ही थी, या थोड़ा सा हमने इसमें क्रिएटिविटी का सहारा लिया, सो इट कनेक्ट्स विद द मॉडर्न जनरेशन, टुडेज यूथ? सो वुड यू लाइक टू आंसर दैट, दादा, सिंस यू आर द क्रिएटिव ऑन दैट? No, as I said, it's a docu feature. So it's a documentation of the of Shri Lekhraj ji. So जिनको प्यार से हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं. So it's a documentation of his journey through from the 1930s till the 1960s. So in different chapters, what all he faced and how he empowered, how he got his enlightenment. So it's a spiritual journey of this man, and we follow that how all and what all he sacrificed, which is for every spiritual leader which happens. But there is something really unique because of the empowerment, and also the introduction and the application of Raja Yoga, Raj Yoga meditation, which he introduced and he applied and he practiced, and which he passed on to the next generation, and given and handed over the organization. Didn't keep it to himself and gave it to the women, and they're all young women and wives who came and just found some kind of a power in when they were there with him. So I think that is the magic of this this film, The Light. I think we are all looking for that light, as आपने कहा, from darkness. So I think this film will give you that light, and maybe what it will do is शायद इस फिल्म से सारे जवाब आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस फिल्म से आपको एक सोर्स मिलेगा कि मैं और जवाब ढूंढने चलता हूँ अभी. So वो एक रास्ता मिलेगा आपको जवाब ढूंढने के लिए. Question will come and we'll explore more in that हाँ, direction. शायद आपको और जवाब आप जानना चाहेंगे. very So ये nice. आपको एक क्वेश्चन डाल के जाएगा, तो आप शायद जानना चाहेंगे कि है क्या, क्यों है. उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा. वो जस्ट एक फिल्म से आपको शायद पूरी चीज समझ में नहीं आए, लेकिन आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आपके दिल में दे जाएगा कि नहीं, कुछ बात है जिसको मैं आगे ले जाता हूँ. So thank you so much. Thank you so much, sir. हीरालाल जी, आपसे एक सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. तो आपकी संस्था कुछ ऐसा कर रही है बच्चों के लिए, या महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता तो वहाँ भी जाके उनको समझाना, या कुछ इस तरह का कर रही है जिससे अवेयरनेस जागरूक हो कि हाँ वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? मैडम, ये संस्था 99% महिलाओं से संचालित है, और इस संस्था में करीब 30,000 डेडिकेटेड महिलाएं पूरे संसार में.
इतना बड़ा फौज है तो ये एजुकेटेड करना, कहीं प्रॉब्लम होता है तो उनको सहयोग करना, हमें जहाँ बुलाते हैं वहाँ हम हाजिर होते हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी साहब खुद भी संस्था से जुड़ते हैं, संस्था के कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं, और संस्था जिसको कहती है उसमें वो हम लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है अभी मुर्मू जी हुए हैं, वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं। वो क्यों? महिला सशक्तिकरण का कार्य जो संस्था कर रही है उसके कारण ये इतने महानुभाव जुड़े हुए हैं। और इस फिल्म के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करेंगे कि जो कार्य प्रधानमंत्री जी 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, या मुर्मू जी जब से गवर्नर बने थे तब से उन्होंने उठाया था, किंतु ये संस्था तो 85 इयर्स से कर रही है। और दादा ने और उनके सारे जो भी फैमिली थी उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो हम महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल भी है, हमारे होम्स भी हैं, जहां हमें बुलाया जाता है, हमारी डेडिकेटेड बहनें जाती है, उन्हें मदद करती है, उन्हें मानसिक रीत से मदद करती है। एक मैं उदाहरण दूं, अभी अनफॉर्चुनेटली बिपिन रावत जी चले गए। बिपिन रावत जी ने तीनों ही माना आर्मी में महिलाओं को, जैसे क्योंकि जब भी शहीद हो जाते हैं तो उनके पीछे महिलाओं को कैसे संभाला जाए, वो कार्य उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को सौंपा था। और आज भी हम ऑलमोस्ट सभी जगह पे आर्मी के जहां भी उनके कैंटोनमेंट है वहां हमारी संस्था वो काम कर रही है। उसी प्रकार ऑर्फनेज वाले भी हमें बुलाते हैं। तो विविध प्रकार से हम इन कार्य से जुड़े हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं, और आगे भी हमारे पास कुछ आएगा तो हम जरूर करेंगे। यह हमारा सबको विश्वास है और हमारा कमिटमेंट है। धन्यवाद. Thank you very much, Shujit ji and Prasad ji, Hiralal ji, and Thank you. all my media friends. We are very happy that we have had this media interaction. Thank you. Thank you. Thank you so much.